Okay, so in this topic, I will be covering dividend policy. The key points that we will be discussing is what is dividend policy. This should be number 2, so sorry about this. Why is dividend policy important and the theories of investor preference. So, what is dividend policy? Before going into this, you should be very clear with what exactly is a dividend. A dividend is a cash distribution of the profit made by the corporation. So let's say the corporation has a net income of 10,000. Out of this 10,000, they decide 6,000 will be paid in the form of dividends, and the remaining 4,000 will be reinvested back to the corporation. So this reinvested amount will go in the retained earnings and it will increase the owner's equity. So this 6,000 that is being paid in the form of dividend, so ये 6,000 shareholders को cash के form में मिल जाएगा. This is called dividend. Now the management has to decide that how much should they give in the form of dividend and how much should they reinvest back into the business. If they decide to give even more dividend, the reinvestment amount will become less. So if the management decides next year that they will so let's say that the management decides that they're going to, instead of paying 6,000, they're going to pay 8,000 in the form of dividends. So if they're paying 8,000 in the form of dividends, only 2,000 will be retained in the corporation. So the reinvested amount will reduce even more. And let's assume that the corporation decides that the whole 10,000 will be paid in the form of dividend. So if the whole 10,000 is being paid, nothing will be reinvested back into the corporation. मतलब कि 10,000 की इनकम हुई और वो पूरी की पूरी 10,000 इन्वेस्टर्स को ही दे दी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो यानी कि बिजनेस में तो कुछ भी आपने री इन्वेस्ट नहीं किया. Why is this reinvestment important? Because this reinvestment determines the growth rate, which means a business will grow, it will expand only when something is being reinvested in the business. अगर बिजनेस में 4,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो इन्वेस्टमेंट से एक्सपेंशन होगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी, बिजनेस की सेल्स इंक्रीज होंगी. इसी तरीके से यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट कम हो रही है लेकिन एटलीस्ट चलो 2,000 की री इन्वेस्टमेंट तो हो रही है जिससे कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो सकती है. बट ओवरहेड नथिंग इज़ बीइंग री इन्वेस्टेड इन द कंपनी, इट्स ज़ीरो. सो व्हेन नथिंग इज़ बीइंग री इन्वेस्टेड इन द कंपनी, जब आप पैसा वापस डाल ही नहीं रहे हो तो उसमें एक्सपेंशन हो ही नहीं सकती है, यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उतने ही रहेंगे. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी फ्यूचर अर्निंग्स इसमें इंक्रीज़ नहीं होंगी. तो जितनी अभी अर्निंग्स हैं वही आपकी फ्यूचर में आती रहेंगी. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपकी अभी मोबाइल फ़ोन की शॉप है. सो यू जस्ट हैव वन शॉप. नाउ इफ़ योर नेट इनकम इज़ वेरी गुड, ठीक है, आपकी नेट इनकम हर बार बेहतर होती जा रही है. सो अब आप सोच रहे हो कि मोबाइल फ़ोन के साथ आप लैपटॉप्स भी रख लो. यहाँ लैपटॉप्स रखने के लिए आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको लैपटॉप्स ख़रीदने पड़ेंगे. सो अगर आप पूरी की पूरी जितना आप कमा रहे हो वो सारे का सारा ही आप रख रहे हो. सो लेट्स से आपने 10,000 कमाया और वो पूरे का पूरा 10,000 आपने अपने पास रख लिया, तो आप लैपटॉप्स कहाँ से ख़रीदोगे? But if you do it the other way around, instead of taking it in the form withdrawing it from your business, यानी कि dividends कुछ भी नहीं है और वो पूरे का पूरा 10,000 दोबारा से reinvest कर दो business में, so then you can purchase the laptops and your business will expand. तो जितना ज़्यादा बिजनेस में पैसा लगाओगे, बिजनेस जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा आपका ग्रो करेगा और जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा प्रेडिक्टेड है कि आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होंगी. So businesses need to decide what type of policy are they going to keep for their dividend.
Are they going to keep a high payout or a low payout dividend policy? ज़्यादा dividend pay करेंगे या कम pay करेंगे? Stable dividend or irregular? What will be the frequency of the dividends? And should the policy be announced? So these are some questions that the management has to think over. Now, dividend versus capital gains. You are all aware about the payout ratio. It is the target percentage of net income paid out as cash dividend. So what was the payout ratio in the example that we were doing over here? Over here, the payout ratio is, I need to open a note because there is less space over here. So out of the 10,000, we assume 6,000 is paid in the form of dividends, and the remaining 4,000 is being reinvested back into the business. So it's being retained. Now, if I want to calculate the payout ratio, the formula is dividend over net income. So the dividend over here is 6,000 and the net income is 10,000. 60% is being paid out in the form of dividends. 60% of the net income is being paid out in the form of dividends, and if 60% is being paid out, that means 40% is being retained in the business. Okay, so moving ahead. So every business has to figure out what will be their payout ratio. How much of the net income are they going to pay out to their shareholders? So business हो सकता है decide करे कि वो 20% जितनी भी net income होगी उसमें से 20% हमेशा अपने shareholders को देगा, यहाँ पर 30% देगा या 40% देगा. Now it depends कि वो कौन सी payout policy रखना चाहेगा. But the problem is that it is very confusing to figure out कि different payout ratios का stock price पे क्या impact आएगा. What will be the impact on the stock price? So अगर किसी company का high dividend paying out ratio है, will it have an impact on the stock price or not? इसी तरीके से अगर कोई कम payout कर रहा है dividend, तो क्या उसकी stock price भी कम होगी या उसकी stock price ज़्यादा होगी? These are the kind of questions that we will be discussing later on. So do investors prefer to receive dividends, or would they rather have the firm flow the cash back into the business, which presumably will produce capital gains? Now it's a question over here कि investors की preference क्या है. क्या investors को अभी cash के form में income चाहिए? अगर उन्हें कैश के फॉर्म में इनकम चाहिए होगी तो उनको डिविडेंड अच्छा लगेगा. बट इफ़ द इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश, इंस्टेड वो चाहते हैं कि उनकी सेविंग्स हो जाए, तो देन दे विल प्रेफर द री इन्वेस्टमेंट टू बी मोर, बिकॉज जब बिजनेस री इन्वेस्ट करता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बिजनेस की ग्रोथ होती है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही होती हैं. तो जब बिज़नेस की सेल्स इंक्रीज़ होंगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टॉक प्राइस भी इम्प्रूव हो जाएगी. सो बेसिकली इट सेज दैट रिटेन्ड अर्निंग्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा होगा आपका ग्रोथ रेट, एंड दिस ग्रोथ रेट इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू कैपिटल गेन. आपकी स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी. Now this is the constant growth formula. So we're going to use this formula in order to see that how does an increase in the payout ratio impact your stock price. So if the company increases the payout ratio, the impact will be as shown on the right. Yes, I'm going to write the formula over here as well. This is your
constant growth formula that you studied in Principles of Finance. Basically, अगर पे आउट इंक्रीज होगा तो ज़्यादा डिविडेंड पे हो रहा होगा, so your dividend will increase, so your D1 will increase in that case. So if the D1 increases, automatically the stock price will increase, right? If the numerator increases, this will increase as well. But the problem is कि जब dividend increase होता है तो साथ ही साथ आपका growth rate कम हो जाता है. Now growth rate is negative over here, ये इससे subtract हो रहा है. So अगर आपका growth rate कम हो जाएगा तो आपकी price कम हो जाएगी. So the other impact is that when dividend increases, your growth rate will decline, and if your growth rate declines, then the price of the stock is expected to go down with it. So जितना ज़्यादा आप कैश के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को पैसा दोगे, उनके पास कैश के फॉर्म में डिविडेंड आ जाएगा. पर दूसरी तरफ से क्या होगा, कंपनी के पास अब कम पैसा है टू री इन्वेस्ट बैक, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट आपके बिजनेस की कम हो जाएगी. और जब बिजनेस की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी तो प्राइस हो सकता है फिर से नीचे की तरफ आ जाए. बिजनेस में तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, सो जब ये न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी तो स्टॉक की प्राइस हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए. So the problem is that there are two opposing effects. One is increasing the stock price and the other is decreasing the stock price. And it is very difficult to find out that what should be the optimum dividend policy. Now the optimal dividend policy has to strike a balance between these two opposing impacts. और फिर से हिंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द स्टॉक प्राइस. So they have to find out what is the payout ratio at which their stock price is going to be maximized. Now there are 5 theories that will explain us that how different payout ratios will have an impact on the stock price and how investors prefer dividend or capital gain. So we have the theory of dividend irrelevancy, which says investors are less concerned about payout than the theory of bird in the hand. A high payout is preferred by investors. Tax preference theory says that investors favor a low payout, consequently a growth. Signaling theory says investors regard dividend changes as signals of management's earning forecast, and clientele effect says the tendency of a firm to attract a set of investors that like its dividend policy. So we're going to go into each one of these theories.